नमस्कार करुच्ची गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी मु जानिनी हमर ओडिशा सरकार कर जदी कोनोसी ऑनरेबल मिनिस्टर जॉइन करचंती आमे आशा करूथुलु हमर श्री अश्विनी कुमार पात्र ऑनरेबल मिनिस्टर मिस्टर पात्र ऑनरेबल मिनिस्टर श्री प्रदीप अमत ऑनरेबल मिनिस्टर मिस्टर तुषार कांत बेरा आम भितर अच्छा मुझे जानली दिलीप राउतराय सेक्रेटरी I am the director. Director Is a Parivar. Director Parivar Odisha Seva and some other for NRO cell government of Odisha. Feedback. Again, I hope मुठी कहूची सुशील कुमार लोहानी Principal Secretary, Department of Panchayat Raj, Sri Manas Ranjan Ponda, Managing Director, CSC Special Secretary, अन्य मान्यगण्य व्यक्ति आपण मानकु समस्त की हमर OPLI रो ओडिशा सोसाइटी जो 54तम अधिवेशन होची सेथिरे आपण मानकु स्वागत करूची हम जानुची हमर टिके यांत्रिक असुविधा जोगु प्रोग्राम टा ठीक रे आरंभ होई परलाने सेति पे समस्त कर्मकर्ता मानक तरफरु आपण मानकु क्षमा मागुची आमे आपण जानिचंती जे ई स्वेच्छासेवी वॉलंटियर माने ओडिशा सोसाइटी ऑफ अमेरिका तरफरु निरविच्छिन्न भाव में उद्यम करि चलिचंती जे ओडिशा रे केमती मॉडर्नाइज करा जाय परिबो हमर लाइब्रेरी सिस्टम आपण देखिले एग्जांपल बरहमपुर रे केमती हेची से भलिया उद्यम चाली रहिची बालेश्वर एवं विभिन्न पार्ट ऑफ ओडिशा रे ए जिंसटा को केमती आहुरी त्वरान्वित करा जाय परिबो गोल इज मोर जा मने थला 24-25 जे प्रति जिल्लार हेडक्वार्टर से गोटे गोटे डिजिटल पब्लिक लाइब्रेरी हे परिबो सेति पे हम समस्त कर्मकर्ता माने आपण मानक सहित जोगाजोग संपर्क रक्षा करिसंती एवं हम आशा करूछु जे आपण मानकर सहाय्य एवं सहयोग रे आमे ताकू नेक्स्ट लेवल को नै परिबा आ एति कहि आपण मानकू समस्त के स्वागत करूची हमर ए OPLI ओडिशा सोसाइटी रो ए कन्वेंशन को धन्यवाद नमस्कार धन्यवाद Prashant, after this the video. Yeah. Okay, you are ready for the video? That video the Nintendo has seen. Yeah, thank you very much. We really appreciate the presence of Honorable Minister Amat and Honorable Minister of Culture, Mr. Patro, and Director of Culture. And I believe the PR Secretary is not here, Mr. Lohani, and the PR Minister, of course, is here. So we appreciate your presence, and we'll go over the panel questions for your response shortly. But first, we would like to share a video, why invest in the library development. And Prashant is preparing the setup for the video, and we'll just get it on in a momentarily. Okay. Aisla. Nobody was there to set it up. No, not necessarily. He has to be there. And after this video, we'll present the panelists set of questions, and I'll go over those questions with you for your kind response. Let's go through the video. He has to play. I don't have the video. Who has the video? Prashanta, you play the video. Video or new video? About headphone लगाइछन् त ठीक अछि क्वेश्चन कर दे फर्स्ट रे जहाँ को फर्स्ट रे त कर दो अपन किसी को दे I will connect this. We will connect the video shortly, but let's go over some of the questions. But first, I would like to
request Honorable Minister Sri Ashwini Patra to few words. I will give each panelist about 2 minutes. Sri Patra, are you there? Hello. I would like to request Sri Ashwini Patra to speak a few words first. Is there? Achan sir, achan the line re. Sir. Okay. Please go ahead. आपण आउटसेट कहि दियंत आउटसेट कहि दियंत सर हम सुनि पारलेनी आउटसेट कहि दियंत आपण अनम्यूट करंतु नहीं आपण म्यूट हे जाइछन्ते रेकॉर्डिंग Ashwini Patra, sir, Ayan, आपण कुछ कहंतु address करंतु the audience for 2 minutes. I would request you to address the audience regarding the library development in Odisha. उपस्थित मान्यवर जंगल परिवेश जलवायु परिवर्तन पंचायत राज पानीय जल सूचना लोक संपर्क मंत्री श्री प्रदीप कुमार अमात संस्कृति निर्देशक श्री दिलीप राउतराय अन्यान्य अतिथि वृंद समस्त को हार्दिक अभिनंदन शुभेच्छा। पाठागार ही विश्व संस्कृतिर गंताघर जने ज्ञानी गवेषक सीओ हाउल कहिथिले The culture of the world is contained in the libraries. पाठागार ही ज्ञान प्रदानर एक निर्भरयोग्य पवित्र स्थली। भारतर पुस्तक माध्यम रे शिक्षा पद्धति प्रचलित हेला इंग्रेज शासन काल रे 19 शताब्दी प्रथमार्धरे लॉर्ड मैकॉले और लॉर्ड को द्वारा प्रणीत शिक्षा प्रणाली माध्यम रे यह प्रचलित हेला। विभिन्न शिक्षानुष्ठान गुड़िकर प्रतिष्ठा संगे संगे प्रथमे शिक्षक माने पाठागार प्रतिष्ठा कले। ए दिगरे मिशनरी द्वारा स्कूल गुड़िकर पाठागार प्रतिष्ठा आरंभ हेला। भारत रे राजा राममोहन राय भली नवजागरण कर्णधार इंग्राजी शिक्षा पद्धति प्रचलन और सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन पाई जनजागरण सृष्टिर मूलदुआ पकाइथिले। पाठागार आंदोलन मूल लक्ष्य प्रति ग्रामर आदर्श ग्राम पाठागार प्रतिष्ठा करिबा और लोकमानक मध्यरे जातीय सचेतनता एकता और स्वाभिमान सृष्टि करिबा। वैद्युतिक गणमाध्यम टीवी इंटरनेट द्रुत प्रसार हेले मध्य पाठागार प्रतिष्ठार प्रासंगिकता आवश्यकता को उपेक्षा करा जाई पारे ना। नूतन सूचना प्रजुक्ति विद्या प्रसार पाई पाठागार परिपूरक भूमिका ग्रहण करिअछि। पुस्तक पठनर अभ्यास द्वारा केवल ज्ञानर प्रसार हुए नहीं, ता सहित मनुष्यर सहजात कल्पना शक्ति पावर ऑफ इमेजिनेशन और सृजनशीलता बढ़े। यह संगे संगे अवसर विनोदन पर पुस्तक पठन एक आनंददायक सहज और सरल अभ्यास। पुस्तक क्षुधा मनुष्यर सहजात प्रवृत्ति। 21 शताब्दी रे ज्ञान और विज्ञान जेपरी विस्फोरण हेउछि तार सदुपयोग पाई और आमर विद्यार्थी मानकर ज्ञान प्रसार तथा चित्त विनोदन पर उन्नत मानर पाठागार प्रतिष्ठार यथेष्ट आवश्यकता रही। एथिरे आम एक गौरवर विषय जे भारतर 19 गोटी राज्य रे पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट रही स्थले ओडिशा तन्मध्यरु अन्यतम। ओडिशा रे 2001 मसीह रे एही
पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट प्रणीत होइथिला एवं एथि सहित पब्लिक लाइब्रेरी रूल्स 2016 मध्य जारी करा जायछि। आजिर व्यस्तबहुल कोलाहलमय जीवन शेष जने साधारण मनुष्य तार स्वल्प अवसर को एक आमोदपूर्ण और शांतिमय परिवेश मध्य अतिबाहित करने को चाहे। जने शांतिप्रिय ज्ञान पिपासु शिक्षित मानव यही अवसर को पुस्तक पाठ तथा ज्ञान चर्चा अतिबाहित करने को पसंद करे। सेथिपाई पाठागार हेउछि ता पई अत्यंत उपादेय। पाठागार परिचालना दिगरे एबे स्वतंत्र भाव में तालीम दिया गलानी एवं विश्वविद्यालय गुड़िक ए विषय स्वतंत्र पाठ्यक्रम प्रचलन कलेनी। पाठागार रे पुस्तक और पत्र पत्रिका को किभली सुसज्जित भाव सुरक्षित करी रखा जाई पारिबो से दिगरे वैज्ञानिक पद्धति मध्य अनुसरण करा जाउछि। स्वाधीनता परवर्ती समय रे भारत सरकार को परामर्श क्रमे हरकृष्ण महताब राज्य पाठागार प्रतिष्ठा प्रथम पंचवार्षिक योजना समय परिकल्पित करा जायतिला। राज्य राजधानी रो एक प्रमुख स्थान रे 1959 मसीह प्राय 3 एकर परिमित जमी रे एक भव्य कोठा निर्माण पर पाठागार प्रतिष्ठा करा जायतिला। 1967 मसीह भारतर पिता महात्मा गांधी का जन्म शतवार्षिकी पालन अवसर रे यह गांधी भवन नाम नामित करा जायतिला। 1987 मसीह यही पाठागार नवीकरण करा जाय 4 महला विशिष्ट कोठा को संपूर्ण भाव 2टी लाइब्रेरी तथा समग्र ओडिशा राज्य लाइब्रेरी एवं भुवनेश्वर शहर पर एक पब्लिक लाइब्रेरी भाव व्यवहार करागला। वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री श्रीयुत नवीन पट्टनायक अग्राधिकार भित्तिरे 5टी उपक्रम माध्यम रे हरकृष्ण महताब पाठागार को नवीकरण करने निमंते निष्पत्ति निया जायछि। एही पाठागारटी राज्यर अन्यतम प्रमुख बर्णाल विशाल पाठागार एवं यह प्रतिदिन शह शह छात्र छात्री प्रतियोगिता मूलक परीक्षा पर आसी थांती। हरकृष्ण महताब राज्य ग्रंथागार अनेक लोकप्रिय मूल्यवान पुस्तक ग्रंथागार अटे। एथिपाई अनेक ज्ञान पिपासु बुद्धिजीवी माने आकर्षित होइथांती। एही पाठागार उपयोगिता एवं लोकप्रियता को हृदयंगम करी राज्य सरकार यार सर्वांगीन उन्नति सहित यह देशर एक अग्रणी अध्ययन गवेषणा केंद्र भाव परिगणित करने लक्ष्य रखिछंती। विभिन्न प्रतियोगितामूलक परीक्षा पाई राज्य सरकार राज्य ग्रंथागार आसुथिबा छात्र छात्री मानक निमंते एठारे कैरियर परामर्श पाई विभिन्न क्षेत्र में सफल व्यक्ति विशेषज्ञ द्वारा प्रेरणादायक वार्ता पर्यायक्रमे उपस्थापन करा जिवो। संपूर्ण कैंपस रे वाईफाई सुविधा उपलब्ध करा जिवो। पाठागार पाठक मानक आवश्यकता सुविधा निमंते बापूजी नगर ठारे एक पब्लिक लाइब्रेरी प्रतिष्ठा हेबो। राज्य ग्रंथागार समस्त पुस्तक को डिजिटाइजेशन करा जाई ई ग्रंथालय माध्यम रे देश विदेशर कोण अनुकोण रे एगुड़िक उपलब्ध करा जाई पारिबो। वर्तमान सुधा 24,781 पुस्तकर डिजिटाइजेशन प्रक्रिया शेष करा जाई या ई ग्रंथालय सॉफ्टवेयर वर्जन 4 क्लाउड माध्यम रे गच्छित करा जाउछि। वर्तमान राज्य सरकार राज्यर समस्त सरकारी बेसरकारी पाठागार गुड़ी को एककीकरण करी गोटे विभाग अधीन परिचालना करने परिकल्पना करिसंती। एथि निमंते सरकार को विभिन्न विभाग यथा ओडिया भाषा साहित्य संस्कृति विभाग, सूचना लोक संपर्क विभाग, शिक्षा विभाग, पंचायत राज विभाग इत्यादि अधीन रखिबा समस्त पाठागार एवं ग्रंथागार गुड़ी को एकत्रीकरण करा जिवो। आधुनिक विश्व होची ज्ञानाभिमुखी शिक्षार प्रसार तथा ज्ञान विज्ञान प्रसार फल पुस्तक गुड़ी जगत जेतिकी समृद्ध संप्रसारित हेउछि मनुष्यर पठन पिपासा सेतिकी वृद्धि पाउछि। तेणु पाठागार आवश्यकता क्रमे क्रमे अधिक अधिक अनुभूत हेउछि। पाठागार हेउछि एक जातीय संपद एवं कौनसी एक देशर सांस्कृतिक जीवनर मानदंड। तेणु तार सुरक्षा तथा सदुपयोग ज्ञान पिपासु प्रत्येक नागरिकर परम कर्तव्य। वंदे उत्कल जननी।
अजय बाबू म्यूट अछंती हेलो Okay. How am I getting muted? Okay. We are very thankful for you, Sri Patra, regarding the library developments and the initiatives taken in the last several months. You mentioned about Hare Krishna Mahatab Library. It's a model library, going to be a model library. And because Rajababu, you are not audible. निशिकांत के देखो हेलो hello. निशिकांत I would like to request Honorable Minister Sri Amat to give his initial remarks. Is he there? Yes. আজি ভর্চুয়াল মাধ্যমে আয়োজিত করিଥିବା এই কার্যক্রমে উপস্থিত माननीय मंत्री श्रीयुक्त अश्विनी कुमार पात्र महोदय उपस्थित थिवा हमरो डायरेक्टर कल्चर श्रीयुक्त दिलीप राउतराय महोदय श्रीयुक्त अमीय कुमार धल महोदय श्रीयुक्त निशिकांत साहू महोदय एवं आज ये कार्यक्रम परिचालन करुवा तथा कार्यक्रम सभापति श्री सभापति महोदय प्रथमे आज विशेष भाव ओडिशा सोसाइटी फॉर अमेरिका समस्त सदस्य तथा कर्मकर्ता को मो तरफ साधुवाद ज्ञापन करुछि सुदूर अमेरिका रही ओडिशा रे किभली भाव रे प्रत्येक वर्गर लोक युवपीढ़ी को आरंभ करी अन्यान्य समस्त वर्गर लोक किभली भाव रे तांकर ज्ञान बढ़ी पारिबो एवं सेहि पई कोन कोन कार्यक्रम निया हबो विस्तृत भाव रे आलोचना करिया पई आज ये क्षेत्र आपण माने प्रस्तुत करिसंती विशेष भाव रे आज लाइब्रेरी जो आवश्यकता उपयोगिता ये ओडिशा समस्त वर्गर लोक केवल शिक्षानुष्ठान नुहे किंबा अन्यान्य अनुष्ठान नुहे तल स्तर आरंभ कर ऊपर स्तर पर्यंत ग्राम पंचायत स्तर एवं एभली कि विभिन्न ग्राम स्तर ऊपर स्तर पर्यंत सबुठी ये प्रक्रिया कार्यक्रम गुणा देखिए आरंभ हो सारी समय थिला जे आमे किछि लोक अवसर विनोदन पाई जेतले लीजर पाउतले
लाइब्रेरी को व्यवहार करुथिले एवं आज ये लाइब्रेरी माध्यम रे जो माने युवपीढ़ी अछंती से माने तांकर ज्ञान बढ़ाया ज्ञान आहरण करने एवं निजको कर्म नियुक्ति रो सुयोग दवापाई विभिन्न लाइब्रेरी से माने निज समय अतिबाहित करथंती एवं विशेष भाव में आज जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी माध्यम रे ई लाइब्रेरी माध्यम रे से माने विशेष भाव में अधिक रु अधिक ज्ञान लाभ कर लाइब्रेरी माध्यम रे कारण व्ययबहुल ये कार्य ये लाइब्रेरी या किए निज घर जो गोटे लाइब्रेरी जब प्रतिष्ठा करिवो ताले जहाँ अर्थर आवश्यकता रहिबो से अर्थ हुए तो अधिकांश लोक से करि परिबे नाही तेणु लाइब्रेरी आवश्यकता निश्चित भाव में रही एवं खुशी कथा जे आज आम जिले में बहुत जिले में गोटाए दिन रे हमें गोटाए समय जिला समस्त पंचायत रे आमे पंचायत रो हेडक्वार्टर रे लाइब्रेरी प्रतिष्ठा करथुले गत मासरे एवं समस्त सरपंच से माने वर्चुअल माध्यम रे निज निज पंचायत रे उपस्थित थिले किछि पंचायत जो गुड़ा का इंटीरियर पॉकेट रही जो नेटवर्क प्रॉब्लम रही हुए तो से उपस्थित नथिले किंतु सेठी लाइब्रेरी प्रतिष्ठा हेछि तेणु आज राज्य सरकार को जो उद्देश्य एवं विशेष भाव में आज आमर प्रिय मुख्यमंत्री श्रीजुक्त नवीन पट्टनायक से जो दिग्दर्शन ताहारी माध्यम रे आमे आमर कार्य प्रणाली आरंभ करछि किबळी भाव में आमे पंचायत स्तर रु एवं विशेष भाव विभिन्न गाँ स्तर रु किबळी भाव में साधारण लोकों को ये लाइब्रेरी माध्यम रे आमे शिक्षित करई पारिबु ज्ञान गारिमा बढ़ई पारिबु जहारी फल रे से माने जो नूतन चिंताधारा जेतिके अधिक लोक लाइब्रेरी को विनियोग करिवे उपयोग करिवे तांकर विभिन्न चिंताधारा से माने ताको परिप्रकाश करि पारे फलस्वरूप राज्य विकास रे ये हितकारक हबो एवं जहा मो पूर्ववक्ता भाई अश्विन पात्र कहते जे आमे गोटे अमृत तले ये लाइब्रेरी को रखिया पई हमर प्रक्रिया आरंभ हो सारी राज्य सरकार से निष्पत्ति एवं ये स्वयं संपूर्ण हेले भाव में आगामी दिन रे ओडिशा रे लाइब्रेरी क्षेत्र में एक वैप्लविक परिवर्तन हबो एवं पुनराय आपण माने समस्त उपस्थित रही ए राज्य जनसाधारण शिक्षा विकास कार्यक्रम नहीं छंती मु आपण समस्त को धन्यवाद दे मोर वक्तव्य शेष करी नमस्कार वंदे उत्कल जन। Thank you very much, Srimat, for your talk and also the description of the related developments in the recent months. I had a direct message from the secretary that at least there are several panchayats where the library has been developed. Maybe the quality will be an issue, but we'll address that in our public library vision very shortly. How the standardization can occur in every panchayat and every district and every block. So no, let me ask Dilip Rautray. So now I would like to invite Culture Secretary, Culture Director, Sri Dilip Rautray. He is also the Director of the NRO Directorate, and we are very fortunate to have him, and he's directly joining from the Collector's Office.
Please, Sri Rautraya, please address. And I would request 2 to 3 minutes because we are running short of time. Thank you. Thank you very much, Pranab sir. Honorable Minister, Tourism, Culture and Excise, Honorable Minister, Panchayati Raj and Drinking Water, Forest and Environment, and Information and Public Relations, my friends from Odisha, and the entire team, the entire team from the Odisha Society of Americas, especially who are championing the cause of library movement from United States. They are championing the cause of library movement in our state in Odisha. तो समस्तों को मोर हार्दिक अभिनंदन ज्ञापन करुछि, नमस्कार ज्ञापन करुछि। प्रथमे मु एया कहिबी जे हमर माननीय मुख्यमंत्री ताको कार्य व्यस्तता जोगु से तांकर शुभेच्छा वार्ता दे पारले नाही, किंतु सेति पई तांकर निर्देश रे आज 2 जण कैबिनेट मंत्री ए कार्यक्रम रे भाग नेउछंती एवं ताहा सूचित करूछि जे ओडिशा सरकार किभली भाबरे ओडिशा सोसाइटी ऑफ अमेरिका सहित अछि एवं तांकर जो लक्ष्य रहिछि स्पेशली लाइब्रेरी मूवमेंट को एक जन आंदोलन रे रूपांतर करिया पई से जन आंदोलन रे मध्य ओडिशा सरकार ताकू सपोर्ट करूछंती। जोटा वर्तमान किछि समय आगुरु माननीय मंत्री इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस कहउथिले जे इतिमध्ये रे ओडिशा सरकार गोटे कंपोजिट डायरेक्टरेट वचन करिया जाउछंती। जदिओ मो होउची डायरेक्टर ऑफ द स्टेट लाइब्रेरी, किंतु आमर गोटे डायरेक्टरेट ऑफ स्टेट पब्लिक लाइब्रेरीज जोटा किछि समय आगुरु मध्ये माननीय कल्चर एवं टूरिज्म मिनिस्टर कहउथिले जे सरकारंकर सेडा विचाराधीन अछि एवं खूब निकट रे ता मध्ये कार्यकारी हबो। तेणु गोटे सिंगल डायरेक्टरेट हेले এই जो कार्यक्रम अच्छी जो विजन अच्छी ओडिशा सोसाइटी ऑफ अमेरिकाज रो आमे से कार्यक्रम को आउरी व्यापक करि पारिबु एवं से कार्यक्रम को आमे पंचायत स्तर को एवं ग्रामांचल को मध्य नहीं पारिबु। मो एटी गोटे कथा कहिबी जे 2 दिन तळे मो श्रीयुक्त दास बाबा का सहित आलोचना करूथिली एवं मु जानी खुशी हेली जे ओडिशा सोसाइटी ऑफ अमेरिकाज रो साहाय्य रे अकुंठ साहाय्य रे बरमपुर ठारे एक लाइब्रेरी क्रियाशील हिछि। एतद व्यतीत बालेश्वर जिल्ला रो बस्ता ब्लॉक रे एवं मयूरभंज जिल्ला रो सुलियापुता ब्लॉक रे एडी 2टी लाइब्रेरी ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन ही सारिछि एवं मो एटी कहि रखिबी जे से लाइब्रेरी गुटिक मध्य अति निकट रे हम ताको क्रियाशील करिवु। से 2 जण ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स सुलियापदा ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर एवं बस्तर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर सहित आम कथबार्ता हेइछु एवं सेमाने मध्य नूतन भाव में जॉइन करिसंती एवं सेमाने मध्य अवगत अछंती जे एटा ओडिशा सोसाइटी ऑफ अमेरिका द्वारा आर इंफ्रास्ट्रक्चर एवं तार कंप्यूटर्स प्लस रीडिंग रूम पाई टेबल आई मीन अन्य फर्निचर सब प्रदान करा जायछि। केवल ताको क्रियाशील करा जिवो एवं समाने मते निर्भर प्रतिश्रुति दैछंती जे ताकू सर आमे अल्प दिन भितरे ताकू क्रियाशील करिवु। ता पई जो मानव संबल दरकार पड़िबो ता मध्य हम सरकार दवा पे राजी अछंती जे लिमिटेड मैन पावर देइकरी ताकू केबली भाव आमे क्रियाशील करिवु। जा फल रे कि ए जो लाइब्रेरी मूवमेंट आपण करूछंती जोटा मते फ्रांसिस बैकन तो गोटे कथा मन पड़ी जाउची जे माने बही होची 3 प्रकार। सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, सम आर टू बी च्यूड एंड सम आर टू बी डाइजेस्टेड। तेणु आज आम जहाँ किसी भी होइछे निश्चित भाव में आम बापा मांकर तादर अवदान रही, किंतु ता सहित बही बहुत अवदान रही। तेणु जो शिक्षा आम लाभ करिचे तेणु से शिक्षा से संस्कृति जो तेणु आर प्रचार प्रसार हो पार बही माध्यम। तेणु निश्चित भाव में ओडिशा सरकार
माननीय मंत्री दुई जन अच्छा से अलरेडी कही सारी ओडिशा सरकार कमिटमेंट फॉर द कॉज ऑफ लाइब्रेरी मूवमेंट एवं मो पर्सनली एज द डायरेक्टर ऑफ द ओडिशा परिवार मु मध्य बहुत खुशी जे ओडिशा परिवार रो निर्देशक हिसाब रे मु मध्य ओडिया भाषा रो प्रचार प्रसार करिबा पाई जेतु आम डिपार्टमेंट गोटे मध्य अनुष्ठान अच्छी तार ना होची ओडिया भाषा प्रतिष्ठान तेणु ओडिया भाषा प्रतिष्ठान माध्यम रे आमे अनेक बही ट्रांसलेशन करिथाउ एवं आमे अति निकट रे आमे करिबा को जाउछु ओडिया भाषा रे जो गप गुडी अच्छी किछि गल्प संकलन को आमे किछि गल्प को आमे ताकु चयन करिछु से गल्प गुडी को आमे विभिन्न फॉरेन भाषा जेंति स्पेनिश जर्मन फ्रेंच एवं जापानीज भाषा रे मध्य ताकु आमे ट्रांसलेशन करिया पई से कार्यक्रम मध्य आमे हम सरकार को तरफ रो आमे आगे नबा को जाउछु एवं एतद व्यतीत ओडिया भाषा प्रतिष्ठान माने माध्यम रे आमे ओडिया भाषा रो प्रचार प्रसार मध्य करिवु ए मु निकट रे त्रिपुरा जाईथिली त्रिपुरा रे मु जानथि एते ओडिया लोक सेठी अछती हठात आपण जानिथिबे जे निकट रे जता बाहुडा यात्रा हला से रथटा इलेक्ट्रिक वायर से कनेक्टेड हेगला एवं रथटा रथ सहित जो मान लागि कि थिले पाखापाखि 6-7 जन लोक सेठी संगे संग से माने तांकर देहांत हितिला तबे मु जतो जाईथिली माननीय मुख्यमंत्री मते पठैथिले जे ओडिशा परिवार तरफ तमे निर्देशक हिसाब रे इमीडिएटली जाईकरी यू प्लेज आवर सपोर्ट एंड सॉलिडारिटी विथ द गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा जे ताकर जदि किछि सहायता दरकार पड़िबो जहां भी दरकार पड़िबो हमें तांको पक्षरे अछु तांको सहित सहायता रो हाथ निश्चय पड़ेबो कारण रथ यात्रा रे एई भली गुटे घटना घटी गला तो से जा हूं मु जतो पहुंचली हॉस्पिटल रे पहुंचली हॉस्पिटल को गहन अवस्था थिला किंतु दिन तो सेठी मु देखली जे सेठी मध्य ओडिया समाज सेठी मध्य क्रियाशील अछि एवं सेठी मध्य 200 वर्ष धरिकरी ओडिया लेबरर्स माने इंडेंचर्ड लेबरर्स भाव रे ओडिसा रो प्राय 2 लाख लोक सेठी अछन एवं सेमानको पिला माने बर्तमान जदि खाली ओडिया कहि पारुचंती तो ओडिया पढ़ी पारु ना कि ओडिया लिखि पारु ना तो सेति पाई ओडिया भाषा प्रतिष्ठान तरफ मध्य माननीय मंत्री के सहित आलोचना करि सारिछि आम विभाग माननीय मंत्री के सहित से एकमत अच्छी जे आमे आगामी दिन में ओडिया भाषा प्रतिष्ठान तरफ केवल जे ओडिशा बाहर नुह भारत बाहर जो ओडिया परिवार मान अच्छी एवं से पिला किभली भाव में आमे ओडिया भाषा को पढ़ाई पारिबा ऑनलाइन क्लासेस माध्यम रे ताकू पढ़ाई पारिबा एवं एतद व्यतीत ताकू आमे सर्टिफिकेट्स मध्य प्रदान करि पारे तेणु मु भाबुची केवल जे लाइब्रेरी मूवमेंट पाई आमे आगुचु ता नुह ओडिया भाषार प्रचार प्रसार पाई आमे आगुचु एवं मु एठी गोटे कथा कहि रखिबी जे आम सरकार प्रोबब्ली इज द ओनली गवर्नमेंट इन द कंट्री जे कि गोटे स्वतंत्र निर्देशालय करिसंती ओडिया डायस्पोरा सहित कनेक्ट करिया पाई तेणु ओडिया डायस्पोरा सहित कनेक्ट करिया पाई जो निर्देशालय हेइची तार अर्थ होची जो ओडिया लोक माने अछंती ओडिशा बाहर भारत बाहर तांको सुख दुख रे आमे भागीदारी हबु शामिल हबु एवं जो ओडिया लोक माने विभिन्न पदपदवी में रही प्रतिष्ठा लाभ करिसंती तांकर स्ट्रेंथ को मध्य आमे ओडिशा ग्रोथ स्टोरी रे ताको आमे आगे नबो जा फळे कि ओडिशा को आउरी आमे उच्चतर सोपान को नहीं पारि तेणु मु विशेष किछि कहबी नाही आउ थरे मु समस्त को सुनिबी एवं जहाँ दरकार पड़िबो मु मध्य रेस्पोंड करबी एज द डायरेक्टर ऑफ ओडिशा परिवार डायरेक्टर ऑफ द ओडिया लैंग्वेज लिटरेचर एंड कल्चर डिपार्टमेंट and of course as the director of the state library. Thank you. Thank you, Sri Directorate. We are thrilled to hear about the NRO Directorate and also to make the liaison with the diaspora globally everywhere. And that is an initiative I think we have been waiting for a long time, and we are so glad to hear about this good news. It was announced in April, but it's very nice to hear from you directly, what steps are being taken. Now, should we go with the, right now, we'll play why library is an investment in the state. And there is a short video of 5 minutes or 4 minutes? 4 minutes, okay? Thank you.
ଯିବା କେତେବେଳେ? Odisha's education system has been steadily improving in recent years. However, it will be very challenging for it to move to top unless it improves its public library system. Investing in better public library system will provide a superior education system and make Odisha students very competitive in available job opportunities. Even if Odisha ranks 10 out of 36 states and union territories, the overall literacy rate is marginally behind national average. Getting proper education is still challenging for many. Listen to what Jayanti talks about Mulkandiri children. ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷାର ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ସରକାର, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଭଳି ଭାବରେ ଯେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ତାହାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଆମେ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବୁ। ଆଜି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଣ୍ଡାଗାଟିଠାରେ, ଯେଉଁଠାରେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଟୱାର୍କର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ନେଟୱାର୍କ ସୁବିଧାରେ ବଞ୍ଚିତ ରହି ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷା ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ସେମାନେ ସୁବିଧା ନେଇପାରିବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ବାଟ। ସେମାନେ ଦୀର୍ଘ 3 କିଲୋମିଟର ଯାଇ ଆସି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଆସି ଶିକ୍ଷାଦାନ ନେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷା, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନେ ନିଜର ମୋବାଇଲ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। କିଛି ଜଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଆଣିକି ସେଇ ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କୁଡ଼ିଆ ବନେଇ ସେଠି ସେମାନେ ନିଜର ଶିକ୍ଷା ପାଠପଢ଼ାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଅନଲାଇନ୍ ସୁବିଧା ଯେଉଁ ସରକାର କରିଛନ୍ତି ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣୀୟ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ଭବ ତାହା ନୁହେଁ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ନେଟୱାର୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ଏବଂ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଭିତରେ ଏହି ବର୍ଷା ପବନରେ ଆସି ପିଲାମାନେ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଯୋଗୁଁ A better library system will also make students more competitive and they do not have to travel far to find a library. Here is what some students told us. ଏଇଠି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛ? ମୁଁ ଏଠି ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡି ସହିତ କମ୍ପିଟିଟିଭ୍ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଆସିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଲାଇବ୍ରେରୀ କେତେ ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ୟୁଜ୍ କରୁଛ? ମୁଁ ପର୍ ଡେ 10 ଆୱାର ଦିଏ। 8ଟାରେ ଆସେ, ଇଭିନିଂ 6ଟାରେ ଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ତୁମକୁ ଲାଇବ୍ରେରୀ କ'ଣ ଫ୍ୟାସିଲିଟିଜ୍ ଦେଉଛି? ଲାଇବ୍ରେରୀ ବୁକ୍ସ ଦେଉଛି, ବହୁତ ସାରା ବୁକ୍ସ ଅଛି। ଯେହେତୁ ଯାଜପୁରରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଛି, ସେଠି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ବୁକ୍ସ ନାହିଁ। ଯାଜପୁରରେ ଯେଉଁ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଛି ସେଟା କ'ଣ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲାଇବ୍ରେରୀ ନା ପଞ୍ଚାୟତ ଲାଇବ୍ରେରୀ? ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲାଇବ୍ରେରୀ, କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ବହୁତ କମ୍ ସିଟ୍ ଅଛି ଆଉ ଇଭେନ୍ ତା ଦେହରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ବୁକ୍ସ ବି ନାହିଁ, ସବୁ ବୁକ୍ସ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବେଟର୍ ଫେସିଲିଟି, ମୁଁ କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଛି ଲାଇବ୍ରେରୀ ପାଇଁ, ବେଟର୍ ଫେସିଲିଟି ପାଇବି ଆଉ ବହୁତ ସାରା ବୁକ୍ସ ମୋତେ ମିଳିବ ଏଠି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଏଇଠି ତୁମକୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍, ମ୍ୟାଗାଜିନ୍, ଇ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ଅଛି? ହଁ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନାହିଁ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ access ଅଛି, but only Google. That's why we cannot use YouTube and other media whatever we need. Okay. That's why it is a very difficult situation for us. I just prepare myself. It is yes. You use mobile phone? I faced a very trouble in my life. That's why this library gives me such a beautiful place. It is such a beautiful place to give me many things. Thus I must be feel very bad if I not attend this library. एग्जाम प्रिपरेशन करूँ तमें स्टेट लाइब्रेरी को जॉब पाई केवल आसो ना सेल्फ स्टडी पे आसो ना कैरियर ओरिएंटेड हेबा पे आसो? सेल्फ स्टडी तो करूँ फास्ट तापर जॉब विथ कैरियर जदि तमें एबे लाइब्रेरी केते दिन यूज करछो, केते घंटा और केते समय यूज करछो? डेली यूज करछो? और जदि तुमको कंप्यूटर, इंटरनेट, मैगजीन, ई रिसोर्सेस, न्यूज़पेपर फैसिलिटी मिलता था ताले तमे एबे जति समय यूज करछो ताठो अधिक करथांत ना कम समय यूज करथांत? जदि कंप्यूटर थांता ताले कोन केते यूज करथांत? मते क्षमा करिवे मो आउ एक कार्यक्रम रे भुवनेश्वर बाहर को जाउथिबा हेतु मु आपनको शेष पर्यंत यही कार्यक्रम रे रही पारनी। समस्त को नमस्कार जनाऊँ। ना पाखरे किछि लाइब्रेरी सुविधा सिख जाई
ଆମ ଡାଇରେକ୍ଟର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। ତମ ସେଇଠି ଭଦ୍ରକ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଛି ପାଖରେ? ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିକି ପଢୁଛ। I'm completing my graduation from Revenue University. After that, I joined Hare Mahata State Library for preparation my job. Library gives everything like job preparation. Personally, job preparation is best for us. The library gives all types of facilities, but I am pursuing for job preparation. How are you meeting your needs without a library? Without library, Using phone or personal computer? Using the library in a nearby town? Buying or borrowing books? Unable to meet any needs? Which one? through the mobile. Through the mobiles. And, why you are not prepared there? You may prepare here. You like to Bhubaneswar is the prepare? best place. That's why we are getting all facilities like institutions, research faculties. That's why we are here. Okay. Thank you. Thank you. ମୋ ନାଁ ନୀରଜ କୁମାର ପଟେଲ, ମୁଁ ସୋନପୁର ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛି। ଏଠି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ପାଇଁ ଆସୁଛୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ପାଇଁ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବାକୁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ପାଇଁ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବାକୁ ଆସୁଛ। ଲାଇବ୍ରେରୀ ନଥିଲେ ଘରେ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ କେମିତି ପଢ଼ିଥାନ୍ତ ଘରେ? ମୋବାଇଲରେ ନା ବହି କିଣିକି, ନା ନିଜ ପାଖରେ କିଛି ଲାଇବ୍ରେରୀ ସୁବିଧା ଅଛି କି ଗାଁରେ? ବୁକ୍ସ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହା ଦରକାର ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ। ମୋବାଇଲ ବି ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ତମ ସେଇଠି ଗାଁରେ ବୌଦ୍ଧରେ କିଛି ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଛି ପାଖରେ? ଲାଇବ୍ରେରୀ କିଛି ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବା ପାଇଁ। ଏଠି ସୁବିଧା ଅଛି। Odisha has a strong track record in various competitive exams, such as National Eligibility-cum-entrance test, JE, etc. It will be mounting task to jump from top 10 to 5. A better public library will substantially support in this journey. Odisha does not have a strong public library system. It has 123 unequipped public libraries for 46 million people. State has made some efforts to improve the system since Public Library Act was passed in 2001. Now, it needs to address the three challenges. One challenge is lack of funding, another challenge is the lack of trained librarians, and thirdly, the lack of awareness about importance of public libraries among its people. Okay, you all heard about this video interview of the students who are preparing for the exams. It was done at Mahatap State Library, Hare Mahatap State Library. This is going to be the premier library in the state. And you all heard whatever the challenges, what are the challenges they are facing? They're facing enormous amount of challenges. The lack of seats, I think Sri Dilip Rautra actually personally visited the library, so he has the first-hand information from the students. But I want to say something, very heartening news, that Barampur Library was used by Durga Prasad Adhikari. He actually topped in one of the IAS examination recently. He prepared in that library, and he has explicitly acknowledged that without the help of the library, he would not have succeeded. And this is a brilliant example. I mean, Odisha, actually in my student days also, the Odisha had a large number of IAS, IPS and other allied officers positions, through the competitive examinations. Now, the infrastructure needs to be improved, and we have a public library vision, which we have shared with the team and everywhere in the Wellen group and others. And I would invite Nishikanta Sahu, chairman of the OPLI, to share this information with all of us. Please go ahead, Nishikanta, please stay within the 5 minutes. We don't have much time actually left now. Namaskar, Samastanko. And I welcome once again to all our distinguished panelists and Honorable Minister Culture CYPRESS, Honorable Minister PR and IPR Sri Amath, and Director Culture and Director Parivar Mr. Roy. First, I would like to thank that Honorable
it has been escalated to Honorable CM, and we appreciate his support to library initiative. And many thanks for that one to reaching out to CM and convincing to make a priority on this one. And from all of us, many thanks for that. And as you know, like we are looking for a vision 2024, because it is inspiring to see the 5T vision of our esteemed CM. Because with 5T vision, the World Cup hockey stadium was delivered in 15 months. 6,872 high schools are transformed under 5T program. And temple project can be executed in 18 months. This is a cabinet approved. And if you see, public library is more universal than a stadium, than a high school, than a temple, because everybody will be using this thing. That's why we request, in the same spirit, with the same 5T spirit of Honorable CM, how the public library can be prioritized all over Odisha. Can I the Karnataka model? That is a national model. They have digital public libraries all over Karnataka. Jodi semane seta kori pauchhanti, teno amga 5T scheme re is library ta kahi hi peribone all over Odisha. Kana 2018 re amga jota PX circular issue hitla to build libraries in all over Odisha in 3 years. Honorable Minister IPR achanti, se nije bi bodh re kochhanti gota kamo jota ki gota exemplary, and also Dilip Gautre, our director. I request sincerely that how this can be prioritized to make the public library vision reality. Can I? Kintu ithwe amar gudai funding dorkar. 287 crores allocate hochi amar Tamil Nadu re. Every year there is a 287 crores. Can I? Tamil Nadu has established the library law in 1948. Kintu ame tete behind ochhe Odisha re. Tenu amar sei level re. Kimti amar funding ta adhika asibo. Tenu ita apun tike raise korantu amar samastang tarfu eta request. देखो केरल रे इटा 100% लाइब्रेरी हे गलानी से डिजिटल लाइब्रेरी बहुत दिन रे हे गलानी हरियाणा भी से बेला प्रॉमिस करछि आम नेबरिंग स्टेट आंध्र सेठी भी 4000 डिजिटल लाइब्रेरी हे जाउछि आ ताबे इंटरेस्टिंग हला जे गोटे वर्ष भितरे से माने 3.5 मिलियन किड्स एनरोल हेछंती पब्लिक लाइब्रेरी रे आम कर्नाटक रे they have 2.5 crore downloads of a particular library app and 55 crore website visits in Karnataka digital public libraries. So, I am say level re kintu Odisha kintu develop hi peribo. So, आपन को सहयोग दरकार कना एटा जदी हि जिवो हमर गोटे वर्ष भितरे आपन जदी एटा चेष्टा करिवे कना झारखंड रे गोटे अछि हमर जामतारा डिस्ट्रिक्ट से माने 150 डेज रे 100 लाइब्रेरीज कर दिछंती ताको डीएम. तनो हमर सीएम को जदी ई विजन अछि ताहले ओडिसा रे भी सेही स्पिरिट के भी ही परियो. तनो आमे ए जो झारखंड मॉडल हला कर्नाटक मॉडल हला कि तमिलनाडु मॉडल हला केमते एटा बीट करिया मीट और बीट करिवा सेटा पई आपन को हमको बहुत रिक्वेस्ट ताक आ गोटे हला बिगेस्ट चैलेंज हमको सब लाइब्रेरीज डिफरेंट ग्रुप रे अछि अर्बन डेवलपमेंट पंचायत राज आईपीआर एंड डिफरेंट ग्रुप्स रे अछंती इवन हमको आईटी डिपार्टमेंट रे अछि कॉमन सर्विस सेंटर किन एटा जदी गोटे डिपार्टमेंट अंडर आसी जिवो ताल गवर्नमेंट रे गुडे सेविंग हबो काना आपन को मैन पावर बिल्डिंग के गुटे जो कॉस्ट रहउची गोटे एडमिनिस्ट्रेशन रहइबो एटा इजी हबो मैनेज करिया पय काना जने डीएम को पाके सब जिंस मिली पबनी तापर आउ गोटे इन्फॉर्मेशन दरकार थला से इटा गोटे वर्क फ्लो ऑटोमेशन ता को गोटे करिया को पड़िबो काना जोटा कि गोटे फिंगर टिप रे आमे सब लाइब्रेरी व्यवस्था देशरे आमे जानि परिबा काना एबे जणा पडुनी को लाइब्रेरी कोन अछि कोडी प्रॉब्लम कोन रहउची आम जो कर्नाटक मॉडल से जो ट्रैक करछंती 3.5 मिलियन किड्स एनरोल्ड की 55 करोड़ साइट विजिट्स की 2.7 करोड़ ऐप डाउनलोड्स ये बे स्टैटिस्टिक्स आम जदी पंचायत राज आम जदी लाइब्रेरी सिस्टम के हे परिबो
ତେଣୁ ଏଇଟା ଇଫେକ୍ଟିଭଲି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଆଉ ତାପରେ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଲା ଆଜି ଯୋଉଟା ଭିଡିଓରେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଯୋଉ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ରହୁଛି ପିଲାମାନେ ଆମ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଯଦି ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଲେଭେଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ହେଲା ତାହେଲେ ଯୋଉ ଇକୋନୋମିକ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ରହୁଛି ସେଇଟା ରହିବନି, ଆମର ଯୋଉ ମାଇଗ୍ରେସନ କ୍ରାଇସିସ୍ ରହୁଛି ସେଇଟା ରହିବନି, କାହିଁକିନା ଏଭ୍ରିବଡି ୱିଲ୍ ବି ଏମ୍ପାୱର୍ଡ ଇନ୍ ଇଚ୍ ରିଜିୟନ୍ and Odisha will have huge investment opportunities କାରଣ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ 10ଟା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରହିଲା, କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଦରକାର, କମ୍ପାନୀ ସେଇଭଳିଆ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବି ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବେ, ନେଟୱାର୍କ ବି ବିଲ୍ଡ ହବ, ତେଣୁ ଏଇଟା ଅଟୋମେଟିକାଲି ପିପୁଲ ୱିଲ୍ ବି ଏମ୍ପାୱର୍ଡ, ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ନଲେଜ ବେସ୍ ସୋସାଇଟି ହବ, ତା ସାଙ୍ଗେ ଇଣ୍ଟରନେଟ ଏନାବଲ୍ଡ ଇକୋନୋମି ବି ହବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ୟୁଏସ୍ ରେ ଆମେ ଏଠି ଦେଖୁଛୁ there is a high return for investment for any kind of investment in public libraries. There is $4 to $9 return in potential values in public libraries. ତେଣୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ହେଲ୍ପ ଦରକାର। ଯଦି ଆମ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ରହିବ, ହ୍ୟାଲୋ, ଯଦି ଆମର ଲାଇବ୍ରେରୀ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ରହିବ, ଯଦି ୟୁଏସ୍ ରେ ଗୋଟେ ଡେଭଲପ କଣ୍ଟ୍ରିଜ ରେ ଦ ୱାର୍ଲଡ ର ନମ୍ବର 1 ଇକୋନୋମିରେ ଯଦି 4 to 9 ରିଟର୍ନ ଆସୁଛି ଫର ଏଭ୍ରି ଡଲାର, ତେଣୁ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆମର ରିଟର୍ଣ୍ଣସ ଆସିବା ବହୁତ ଅଧିକା ହବ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମର ସରକାର ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମର ଆନୁଆଲ ବଜେଟ ରଖିବେ ତାହେଲେ ଆମ ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ ହବ। ତେଣୁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ। ଆଉ ତାପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ୱେଲକମ ଷ୍ଟେପ ଯେ ଆମର ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତ ଆମର ୱାର୍ଲଡ କ୍ଲାସ ଲାଇବ୍ରେରୀ ହବା ପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ଆମର ଡିରେକ୍ଟର ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ କହୁଥିଲେ, ଦିସ୍ ଇଜ ୱେଲକମ ଷ୍ଟେପ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହାଉ ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାର୍କ ଲାଇକ୍ ଆମର ଅଛି ବୋଷ୍ଟନରେ ଯୋଉ ପବ୍ଲିକ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଯୋଉଟା ଅଛି, କି ନ୍ୟୁୟର୍କ ପବ୍ଲିକ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଛି, କି ଆମର ୟୁରୋପିଆନ କଣ୍ଟ୍ରି ଯୋଉ ପବ୍ଲିକ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଛି, ସେଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡର ଲାଇବ୍ରେରୀ ଏଟା କେମିତି ହେଇପାରିବ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ। ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଆସିବାର ଅଛି ଯଦି ୟୁଏସ୍, ଆମର ସେଇ ଏଇ ଲାଇବ୍ରେରୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ କେମିତି କୋଲାବୋରେସନ କରିକି ସେଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ମାନେ ୱାର୍ଲଡ କ୍ଲାସ ଲାଇବ୍ରେରୀ କେମିତି ହେଇପାରିବ। କାରଣ ଏଠି ରିସେଣ୍ଟଲି ଆମେ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକଲ ଦେଖୁଥିଲୁ ୟୁଏସ୍ ରେ ଯେ ବୋଷ୍ଟନ ପବ୍ଲିକ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଇଜ ରେଟେଡ ଆଜ the best building in the to make a change in America. ତେଣୁ ସେଇଭଳିଆ ଆମର ଲାଇବ୍ରେରୀଟା ଏଠି ଯଦି ରହିବ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ସେଇ ଗୋଟେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାର୍କ ପିସ୍ ହବ। ତେଣୁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଅନୁରୋଧ। ଆଉ ଗୋଟେ ମୋର ଲାଷ୍ଟ ଇନପୁଟ ହେଲା ଯେ ଏଇ ଇନିସିଏଟିଭରେ ଆମେ ଯଦି ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଲେ, every household will have internet access or email address or a library card. Every household should be able to get a library card and email ID. Can add a significant impact. Can ethi lokone nije empower hebe and it will save governments a big time. Can government good spend କରୁଛନ୍ତି ଆମର ବିଭିନ୍ନ ସ୍କିମ୍ସ ରେ, ଯଦି ଲୋକମାନେ empower ହେଇଯିବେ ତାହେଲେ ସ୍ପେଣ୍ଡିଂ ବି କମି ଯିବ। ତେଣୁ ସେଇଟା ଏଇ ଯୋଉ 2024 ଭିଜନ ରେ ଏଟାକୁ ଆପଣ ଇନକ୍ଲୁଡ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଆଉ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଏଇଟା ରେଗୁଲାରଲି କେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରିବା, ଏଇଟା କେମିତି ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ହବ, ଆପଣଙ୍କ ସହଯୋଗ ଦରକାର, ଗାଇଡାନ୍ସ ଦରକାର। କାରଣ ଏଇ 5T is very inspiring. We need to see this thing. Thank you once again. କାରଣ ଆମର ଟାଇମ ବହୁତ କମ ଅଛି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ସହଯୋଗ ଦରକାର। ଆମେ ଏଇଟା ପଛରେ ପୁଣି ମିଟିଂ ଟା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନଙ୍କୁ ବି ଅନୁରୋଧ, ଫ୍ୟୁଚର ମିଟିଂ ଆଉ କରିବା ପାଇଁ। I think thank you very much for providing this library vision. And we are heartened actually to know that from the Minister PR and Minister Culture and Director Sri Dilip Rai about the latest developments and the initiatives being taken. We will go to the question and answer session, and I would ask this question first to Sri Patro. Is he there? Don't see. Right. Honorable Minister Sri Patro, are you there? No, I think Honorable Minister has just left. So okay, I will ask then you, Sri Rai, this question. The public library was instituted in 2021,
Why do you think it has taken so long to implement this? I mean, right now I see that strong steps are being taken. And how soon we know we'll have this Public Library Act, so that we have the State Library Council, District Library Council, and the Directorate, so that the steps can be taken to accelerate these developments. We would like to hear from you a roadmap and the timeline, sir, about this. I'm very happy that the concern for a public library is here, and we in Odisha government, are also equally concerned for a public library. And as all of us know that that our honorable CM himself is a scholar, he's a writer of, he's an author of a few books, and he's one of the favorite pastimes he used to spend in the library. I remember when he was in the first term, when I was one of the office bearers in our association, and he made it a point to visit the library, and he also donated many books. So the concern which has been raised by OSA is very appreciable. Number one, now that we are going to have a unified directorate, the Honorable Minister INPR is also here. He himself has endorsed the particular view of the government that the study centers, the study centers which were under the INPR department in different district headquarters are all being roped into one directorate under the culture department. So that will be a directorate of state public libraries. All these libraries per se, whether it is under the INPR department or under the different municipalities or under different organizations, so they would come under one single umbrella. So once that comes, which is that is actually a government decision. It will go to the cabinet, and so it's actually in the offing. Very shortly, it's going to happen. So I should not announce that. That is a prerogative of the government. I should not do that. But yes, it is happening very, very shortly. So all these will be clubbed under one umbrella. That will be the Directorate of State Public Libraries. That is number one. Number two, once it comes, yes, under the 5T initiative, the government of Odisha would also ensure that public libraries per se are organized, and whatever critical gaps, be it in infrastructure, be it in quality, manpower, all those will be infused. And number three, very recently, as it has already been discussed, the state library, for example, the Harikrishna Mahtab Library, which is the premier library in the state of Odisha, that is being converted into a world-class library. I repeat, it's a world-class library, and it is being done with the assistance of Odisha Mining Corporation from their corporate, it's basically CSR funding, corporate social responsibility funding. And by the end of December, it has been targeted that it would be completed. Now, if we see the state library per se, the students actually who visit the library are all basically job seekers. Mostly they come for preparing for different competitive examinations. The space was a constant. There was no AC in that particular room when Bhuvnesh was recording temperatures to the tune of 45 degrees centigrade. So the government of Odisha and the CM in particular had made it a point for which the 5T secretary himself had visited, and now the air-conditioned machines have been provided in the study centers. Now about on each given day, about 400 to 500 students come every day to the library. That is number one. Number two, we are also decentralizing the library facilities even in Bhubaneswar. Why? Because Bhubaneswar has also expanded over the years, and Bhubaneswar, for example, in Bapuji Nagar, for example, we have one integrated public
integrated citizen center. So the second floor and third floor are being converted into libraries and study centers, so that the pressure on the Harikrishna Mahatab State Library will be eased to a great extent. That is number two. Number three, you must have heard about a flagship program of the government of Odisha called AHAR, where the poor people are provided meals for only ₹5, a square meal for only ₹5, and that is a very popular program, very successful flagship program of the government. So that under that AHAR program also, we are going to open one AHAR center in the State Public Library, in Harikrishna Mahatab State Public Library also. Already the space has been identified, and by December, it will be also operational. So once the AHAR center is operationalized, and that particular AHAR center will only cater to the interests of these boys and girls who come to the study center and the library for their research or for their studies. Besides that, we are also trying to rope in, we have already in consultation with the Bhubaneswar Municipal Corporation to have libraries in different parts of the city, at least in different wards. I remember having inaugurated with the MLA Bhubaneswar Central, Mr. Anantanaran Jena, a particular library which has come up with the assistance of MLA LAD and the Bhubaneswar Municipal Corporation, which is near the jail road, that is in Bhubaneswar. So that is what also the Bhubaneswar Municipal Corporation has also been planning, that they will have libraries, public libraries and study centers in different wards. So this is actually a process which will start, and with OSA taking the lead from miles away, we are also inspired by that. And I would also tell that in that public library, which is also coming up in Bapuji Nagar, that will also have an AHAR center. Besides that, we find that no children or no elderly people also come to the library. So in Bapuji Nagar, for example, a lot of elderly citizens are there. They are basically the first rate citizens when Bhubaneswar was established as the capital city in 1948. They were the people who have already settled after retirement. So we also want to promote the library culture amongst the elderly as well as for the children. Because if you see the state library, the Harikrishna Mahatab State Library, the footfall of the school children is almost nil. Hardly somebody comes. So it is not only for the college and the university boys and girls, we also want to catch the children young. So we want to make it child friendly. So that is why I said that the Harikrishna Mahatab Library is catering to different age groups, and it will have the state-of-the-art facilities, which the state will be proud of. Yes. I apologize for interrupting you, but I'm so glad to hear that the diversification of libraries in the Bhubaneswar municipality area. But what about the district? I know that there are 13 districts which have no district headquarter library, and the 17 of them are in very bad state. Okay, because we had several meetings with the culture department. So is the budget allocated for next year for the 30 district libraries, which is under your purview? So could you elaborate on that? What's going to happen to those 30 district libraries? And then I will go to Honorable Minister PR to ask about the Panchayat Raj. No, already as I was mentioning, the rest of the districts, actually 13 districts didn't have the libraries. Already funds have been placed with them. And some of the districts have not started the building because of some problem with the space. But then the direction has been issued that pending finalization of adequate or appropriate space, you can hire buildings and operationalize the district libraries.
that instruction has already been issued. That is number one. And number two, budget provisions have been made for these libraries, for the district libraries to be functional. And number three, the study centers which were under operation of the INPR department, Information and Public Relations Department, those are being taken over. I mean, very shortly they are being taken over. Already government has taken an in principle decision that once the Directorate of Public Libraries is constituted, the study centers, etc., which were functioning under the INPR department will also be taken over by the Culture Department. So once that, I mean, which is very, very shortly, which is going to happen very shortly. So in the days to come, you'll have district libraries functional in all the districts. So thank you very much. I really appreciate that you are committed here for the 30 district library within the next year or so. That is very heartening news for us. The one question now I will direct to Honorable Minister of PR. What are the steps being taken to institutionalize these libraries at Panchayat Raj, every Panchayat level? Just like in Grama Sadak Yojana, can you please commit that there will be library in every Panchayat in the next year or two? Sir, unmute karantu sir. Subhuni sir, amka katha subhuni sir. We cannot hear. Suila. As I have earlier narrated that in both districts, which is my home district, we have already taken steps, and in a single particular day, at a particular time in the afternoon, all the panchayats of the district, by implementing this library by virtual mode, we opened all the libraries of the Gram Panchayat in a particular day. Even except some few where there is no net connectivity, it is completed. The intention is that we want to show that the state in other districts, they should go by this process, and there should be and steps should be taken for taking this this initiative in other districts. And besides this, and again I want to narrate that Church or in both the district. some guidelines for जो बौद्ध डिस्ट्रिक्ट रे केतेटा लाइब्रेरी खोली चे एबे एग्जैक्टली नंबर यू हैव हम बौद्ध डिस्ट्रिक्ट टोटल हला 69 ग्राम पंचायत, and in a particular day at a particular time in the afternoon, तीन चारटा पंचायत को छाड़ी देला, बाकी सब पंचायत गुडा जो नेट रो कनेक्टिविटी नाही, तीन चारटा पंचायत को छाड़ी देला, बाकी सब गुडा के ते दिन सेटा खुली छि, and सब गुडा के बुक सप्लाई हे से माने पंचायत किडी सारी बही किडी सारला पर ओपन है लाइब्रेरी ताकू बही पत्र नु आरंभ करी तो लाइब्रेरी रूम करी तो चौकी टेबल सब पके सारला पर इन अ पर्टिकुलर टाइम दैट वाज. So what was so special about Bodh? I know I come from Jagatsinghpur district. Jagatsinghpur district every panchayat library nahi. So what steps can be taken for each district magistrate to take the steps so that libraries are open in every panchayat? It is the panchayat has own fund. Panchayat ro nijoswa party अछि जो थरे
राज्य सरकार व्यवस्था करछिन प्रोविजन रहिছে they can purchase books and पंचायत रो क्षमता अछि they can build library and equipments जार फलरे पंचायत is self sufficient to build a building, to purchase equipments and to purchase books. You're starting from CFC, SFC to other related funds. पंचायत गुड़ा के समान करी पारी कारण ताको पाखरे sufficient क्षमता अछि and that's why the guidelines for panchayat library and information center our we have issued a letter on dated 28/9/2018 and it is a long guideline. The objectives that has been also narrated. It is also a long scope of Panchayat Library and Information Center in the present backdrop. And besides that, the library where it will be established, identification of sites, guideline specification of construction code ढांचारे से तैयारी हो से व्यवस्था रही छी एग्जीक्यूटिव एजेंसी के से कामटा करबो एग्जीक्यूटिव एजेंसी से मध्ये तार मध्ये व्यवस्था है छी कोन कोन सुविधा रहबो द पंचायत लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर शुड बी इक्विप्ड विथ फॉलोइंग एमिनिटीज ता माने प्रोविजन ऑफ फर्नीचर इक्विपमेंट्स लाइब्रेरी एम्पावरमेंट माने आपण का तार दायित्व देबे कोन करिवे से समस्त व्यवस्था रहिछि Thank you for this clarification. But are there directives given to the district magistrate to implement these plans? So that is what we are most interested. If a general directive given to all the district magistrates, then it can happen. As I hear that there is no funding, sufficient funding is there, and there is a plan, and it should be done. But I know I'm from Jagatpur district. I don't know libraries in panchayat. A direction has been given to collector and PD for information and necessary actions. Also, all videos for information from down below, from collector to PD to videos, we have intimated in this regard earlier. Okay, thank you for letting us know this. Now, I think there are a couple of questions about internet connectivity. Unfortunately, the IT minister and IT secretary and the CEO or MD of OCAC, all three could not be present. So there are some personal family problems. There's death in the family for the Mr. Behra and also Mr. Manas Panda. So I'm sorry, but the networking question, as the PM minister said that there are certain villages, Odisha actually has the highest number of villages, about 6,000, which have no connectivity whatsoever. That is for your information, sir. So we asked this particular question to IT minister sometime back 2 years ago, that when are the connectivity is going to be installed? You saw the video, the poor girl is pointing to the mountain where students have to climb and get the connectivity. See, look at their phone so that they can study. So that is a very sad state. And I would request your help, sir, Sri Amat, that you actually connect to the IT minister and the IT secretary and the IT directors that these connectivities should be established in the remote villages where there is no connectivity. So, and this we had followed up, almost 2 years ago, and we'll appreciate your help. We'll be very grateful that you can follow up. These are the panchayats which have no connectivity. Please provide the connectivity. Thank you. We are very much alert with this, and the government is very careful on this. And our honorable Chief Minister, he has repeatedly pressed the government of India to have connectivity to all unconnected villages, and by now we are taking steps, and we are
making correspondence with the government of India, and particularly when required, we used to take the help of our Honorable Chief Minister, who used to press the central government for this connectivity, and we hope in the near future the unconnected villages may be connected. Thank you. Because Actually, we will invite Ashwini Vaishnav actually in one of the meetings in the coming months, so that this can be sorted out. 6,000 villages in these days is not acceptable. I know it is an interplay between central government and the state government. So I have personally written to Ashwini Vaishnav about it, and I know there was some issues with the connectivity on the 5G issues, etc. So, but I think the pressing need or demand should come from the state to the center. Yes, state has already demanded, and we have also offered that will provide the lands and other needed investment to the states, to the center. All lands required for this purpose, the government has agreed to for. Sandeep Babu has raised the hand. Please go ahead, and we'll only go for 1 or 2 minutes max. Sandeep Babu, my question is that all the panchayat libraries were to be can they be installed in the Rajiv Gandhi Seva Kendras? Is the minister aware of that decision or policy? Well, temporarily we can install it, we can start there, but we are doing it separately for in permanent nature. Permanent for separate library building with all equipments is needed. Say कार्यक्रम चालू से किंतु temporarily हम start करियो पहले जो कि माने गृहर आवश्यकता रही है जदि गृह नहीं ताले आमे हमरो राजीव गांधी सेवा केंद्र रे स्टार्ट कर परबा कारण से राजीव गांधी सेवा केंद्र रे आवश्यक स्थले आमे आलिया हमरो ए जो बैंक गुडा को मते खोले दिउ त किछ असुविधा नै किंतु आमे सेपरेट इट इज सेपरेट एंटिटी रखि तार स्वतंत्रता रखिया पई विभाग कार्यक्रम होछि नै राजीव गांधी सेवा केंद्र रे हेले इमिडिएटली स्टार्ट करी हबो जोठी राजीव गांधी सेवा केंद्र तो ऑक्युपाइड हेनी अनऑक्युपाइड पडिची करी हबो किंतु आपण जदी लाइब्रेरी करिया पई करिया 5 वर्ष लागि जीवो कंस्ट्रक्शन बा एलोकेशन अन्न जिंस सो आई वुड रिक्वेस्ट द मिनिस्टर जे एटा टिके मन रे रखंतु आ राजीव गांधी सेवा केंद्र रे जोठी अछि टिके ऑर्डर कर दियंतु जे सेठी से प्रायोरिटी बेसिस सेठी आरंभ होई जाऊ. Thank you. Thank you. Is anybody else raised the hand? Upon question, Mrs. Nalin Patnaik. No, I will do that. So, मैं अपन. हाँ, सही कर दिया, सही. We have got only 5 minutes before the inauguration. ମୋର ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ସଜେସନ ଥିଲା ଯେ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ମିନିଷ୍ଟର ଯୋଉ କହିଲେ ସରପଞ୍ଚ ମାନଙ୍କର ବହୁତ ପଇସା ଅଛି ଆଉ ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ବିଲ୍ଡିଂ କରିପାରିବେ ବହି କିଣିପାରିବେ ଆମେ ଆମର ପାଣ୍ଡେମିକ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଲାଇବ୍ରେରୀ ଟିମ୍ ବହୁତ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିକିରି ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଲେଖା ଲାଗିବ ସେଟା ଗୋଟେ ଏଷ୍ଟିମେସନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଦିଆହେଇଥିଲା ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମର ପଞ୍ଚାୟତରେ ସରପଞ୍ଚ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏନଫ ଫଣ୍ଡ ଅଛି ସେଇ ଫଣ୍ଡଟାକୁ କିଛି ସେମାନେ ଏଷ୍ଟିମେଟ କରିକିରି ଗୋଟେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ହଲ୍ କୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଲାଗିଲା every time because we are relying on 15 different people. This Muasis other was okay. Thank you very much.
Now I want to give to the next president of OSHA, Mrs. Lina Mishra, to say thank you and summarize. Recording it. Okay. Is to say a few words? Go. Namaskar. Thank you, everyone. For joining this PLI seminar. This is a बहुत पुराना हमारा committee usara, and it's very glad to we are beginning room other in kind of involved. I'm very happy to see this. It's going actually in a very right direction, and very I would like to thank all these invitees joining in this seminar. And बहुत भलो कथा सब हमें कथा लेडी both brainstorming session we had, and खुशी लागला सुनी कि हमें बहुत गुडे काम भी हो ओडिशा गवर्नमेंट इज वेरी पटनायक बाबू आपनकर हेडफोन टिके दियंतु लीना मिश्र को शुभुनी कथा এটা শুভনি তুম কথা এটা কানেক্ট দেখবে এটা শুভনি সুজি ওকে so কিন্তু গোটে জিনিস I think so na ame बहुत एटा सहिला परे great that we had a great brainstorming session बहुत जिनिस जानि को मिलला जे केते काम जानिया को पाइलो but आउ गुटे जिनिस तथापि शुभुनी same thing I'm talking of मैं कहिबे थी जे हमें समस्त के लाइब्रेरी तैयारी करिया कथा कहू जे great thing that's how that was our idea, and then बहुत बड़ माने भलो लाइब्रेरी हेले सेरा समाज को रियली बहुत हेल्प करिवो ऑल हमें बहुत जिनिस से विषय कथा हेले मो आउ गुटे साइड कहबो जो सेटा होची हाउ टू इंप्रूव द रीडिंग हैबिट्स. इट्स वेरी इंपोर्टेंट हमें लाइब्रेरी सयटा करबा कि हमें जदी पढिबा को आसीबेनी ताले पढिबो किए सेठी बसी पढिया पई भी दरकार खाली पिल्ला कहिले हबनी पढिबो किए पिल्ला बड़ छोटो एडल्ट लेडीज each and everyone should inculcate that reading habits. Atapai jodi just kode mu dilan I know we have strong like when amare to time of actually but gama nai dinit re kohi je amaro gote ethi kemti am school manangare eta gote out further out discussion we will soon continue that, but amku chinta kariya padibo even grade 1 kindergarten pilla केमिति से रीडिंग हैबिट ता हमें सिर्फ छोटो बड़ो ताको भीतर इंटीग्रेट करेबा आउन इवन एवरी फैमिली हां स्कूल मानकरे वी हैव लाइक lot of things happens here in the schools education system रे integrate हेची रीडिंग हैबिट्स ता पिल्ला माने स्कूल गले समर रे केतेटा बही पढिले सेटा तांको कुहा जाउची तो से माने लाइक मुळुरु नाही हम पढिबाटा निहाती दरकार से हैबिट ता भी इनकॉर्पोरेट करिया बहुत दरकार. With this I would like give this to our Lolatendu Mahanti, our past president. So and thank you everyone for joining this session. Thank you Lina. Now I would like to invite Lolatendu Mahanti to say a few words and summarize the discussion and the outcome and the action items. Go ahead. समस्त को मोर नमस्कार सुना उचित समस्त को मोर नमस्कार आज जो मीटिंग रहिला आई थिंक इट वाज अ वेरी प्रोडक्टिव डिस्कशन हे पाला जो हम समराइज कलु जो चैलेंज वीडियो रे आपण माने देखिले तीनटा जिंस चैलेंज हम रहिला वन इज द लैक ऑफ फंडिंग गुटे रहिला हमर जो ट्रेंड लाइब्रेरियंस एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली attracting the people for the library. आपण देखले मिनिस्टर कहले डायरेक्टर भी कहले कि फंडिंग रे कोनो असुविधा नाही इंफ्रास्ट्रक्चर रे सब चलीची इंटरनेट इज गोइंग टू कम वेरी सून किंतु द चैलेंज जो लास्ट चैलेंज ता हम रहिला जोटा कि टू ब्रिंग द पीपल टू द लाइब्रेरी मेक देम अंडरस्टैंड कि लाइब्रेरी केते इंपोर्टेंट रहिची. लीना मिश्र कहले छुआ बळु केमिति पिला के हैबिट पढाइबा सो दैट पीपल आर अट्रैक्टेड टू लाइब्रेरी. हमको जदि आज टॉप 10 रे टॉप 5 रे आसिया को पड़िबो तने सेही जिस्तो के लक्ष्य करिया को पड़िबो कि लाइब्रेरी इज देयर एंड इट इज देयर टू सपोर्ट पीपल फ्रॉम चाइल्ड टिल दे गेट अ बेटर जॉब. सेरे मो एही कथा गोटे कहूची सेही त पई हमर केवल गवर्नमेंट रो सहायता दरकार नै ता सहित हमर जो कम्युनिटी अछि हमर जो लोकल कम्युनिटी अछि एनजीओस जो माने अछंती सेमान तरफ बहुत सहायता दरकार जोटा कि से माने इन्फ्लुएंस करिवे तांको सोसाइटी को कि केमिति एटा हेल्प करि परिबो so that all the kids actually start learning and come to library and learn more. मु या कहि कि समस्त को वर्तमान धन्यवाद देबी and thank you honorable minister Mr. Amath,
Thank you, Aswini Patra ji. Amato Palelani. So thank you, Mr. Patra, Honorable Minister Panchayat Raj. Thank you, Dilip Rautrai, sir, Mo Parivar Director. ता छड़ा आहुरी बहुत लोग हम जॉइन करी पारि नाहंती ता छड़ा जो माने सो अटेंड करछन तांको पय हमें बहुत धन्यवाद कारण इस एवं प्रणव बाबू सब बळे एक्टिवली एतरे इन्वॉल्व रहिचंती तांकर फीडबैक तांकर एडवाइस सब बळे एनकरेजिंग रहिची आपण माने समस्त जो रखरे आपण जॉइन करछंती सितमे म आपण माने बहुत धन्यवाद जणाउची होपफुली इन वेरी सून विथ योर कोलैबोरेशन with individual appreciations to the effectiveness of the library. Our Odisha Society of America active participant to have a better library. We should be able to make or improve our public library and provide a better library services to every citizen of Odisha today, maybe in future, in a couple of years. Thank you very much. Thank you, Lalatin. Yes. I'll just take 1 minute, sir. Sir, the founder, chairman of the Bakul Foundation, Mr. Sujit Mahapatra is here. Sir, Bakul Foundation has been doing an exceptional work as far as taking the library to the people doorstep. So, sir, I'm very sure with Bakul, with organizations like Bakul Foundation in the helm of affairs, we can definitely, the collaboration with Bakul Foundation and the government of Odisha, we can really make it a very popular movement and make library of felt need for the community. So I really thank the initiatives of Bakul Foundation, the chairman who is here, sir. And yeah, we are, sir, we are very actively working with Sujit Babu, and he is very actively involved, and we know that he is also taking the initiative for the district library in Sambalpur. And with the NGO libraries participating in this discussion, we have a very large group of people, 400 to 500 in one group. This is called Odisha Library Network. Some of them have gone and met you. And I really appreciate and thank you, Sri Dilip Rautrai, for staying. He has a pressing engagement to go, but he stayed here all along, patiently listening to our discussion. And we really thank you from the bottom of our heart. Thank you very much, sir. And this is one statement I can make. Socrates had one time said that the libraries are the most democratic of all institutions in the world. It's free and open. He was a collector of books. Many of you know that he was an avid reader and a collector of books. So during those days, he had made this glaring statement that the library are the most democratic institution. Everybody can walk into the library to the knowledge sources there. So I hope, we dream that our state will be the model state in the entire country. With that, I thank you all for, coming, attending. Pranab Pani is sitting right there, and then he is a tireless worker. And we have so many good people in our midst. So thank you all. And, Amiva Dhal, I am so thankful to you for attending this. So many people, Virendra Babu, and I really think that this movement is really catching fire. Thank you so much. Thank you very much. Well, namaskar. Namaskar. Thanks a lot to Dr. Ajay Mahanti, Mr. Pranab Pani, and Mr. Sahu, Mr. Mahanti. Really, I have no words, and I really salute the commitment of Odisha Society of Americas for this particular noble cause. Namaskar. Hello.
नमस्कार